Welcome back. Time is 3 p.m. and now we are heading back from Nagpur to Hyderabad. हैदराबाद जा रहे हैं। कहाँ गए थे तो? कल नागपुर गए, अभी जा रहे हैं वापस। एक दिन का ट्रिप। चलो यहाँ से होटल से निकले अभी तो 497 किलोमीटर्स टू होम और एग्जैक्ट 12 बजे पहुँच जाएंगे। एक्सपेक्टिंग टू रीच बाय 10:30-11 अगर ज़्यादा ब्रेक्स नहीं लिया तो। अभी तो ट्रैफिक है। नागपुर इज़ वेरी गुड सिटी। इट्स ऑलमोस्ट लाइक हैदराबाद। ज़्यादा घूमने के लिए जगह नहीं है लाइक टूरिस्ट प्लेसेस, बट इट इज़ वेरी पीसफुल to live. You get everything what you want. You even have metro. IT is here. Haldiram, man, the food is awesome, yeah. I don't think so we get that kind of food in Hyderabad. It's a must try. It is that yummy. Everything is yummy, yeah. Let it be hot dishes, sweet dishes, everything is good. Whenever you come to Nagpur, there are many Haldiram centers. You can eat at any place. Finally taken a break after long time. After 170 kilometers, this is the first break taken because फिर sunset होने के बाद भगा नहीं सकते. So in another 4 to 5 kilometers we will be heading into Telangana. Pace is going good. Most probably 11-11:30 तक हम लोग पहुंच जाएंगे हैदराबाद. होप सो. अभी ये छोटा सा ब्रेक, कॉफ़ी ब्रेक, फिर नेक्स्ट ब्रेक होगा डायरेक्ट निज़ामाबाद के बाद. बाइक्स आर परफॉर्मिंग गुड एक्चुअली और सब लोग आए हैं बाइक्स देखने के लिए. चलो भाई, टाइम इज़ 5:30 और सनसेट होने को अभी 1 घंटा बाकी है. तो इन दैट 1 hour वी हैव टू एटलीस्ट क्रॉस 90 किलोमीटर्स. दैट इज़ वी हैव टू गो टिल निर्मल. हैदराबाद 331 किलोमीटर्स, यानी ORR होगा अराउंड 300 किलोमीटर. फाइनली एग्जिटिंग महाराष्ट्र. दिस इज द महाराष्ट्र चेक पोस्ट. वेलकम टू तेलंगाना. देयर वाज अ रिवर क्रॉसिंग और वो रिवर के बाद सीधा तेलंगाना. Wow, this place is awesome, man. Oh, awesome actually. Ada. This view is another level, yaar. Wow, the golden hour, you can say, or the sunset timing. Very nice. Oh, the contrast levels you can see. This is green, there's black, white, and then the gold red. Wow. अब यहाँ से फॉरेस्ट एरिया शुरू
I think till Nirmal there will be forest area. I don't know why this time, which is 6 o'clock, from 5 to 6, I think this is the best time to ride. 12,006 kilometers, 2 दिन में 1000 kilometer. I think I have to go this type of rides every week. This is the best highway, यार, seriously. कितने सारे bugs, almost बहुत सारे हैं. भैया చెప్పు भैया Experience చెప్పు. అసలు అది నాకు last 2 hours ride was next level. I'm feeling the road actually. हाँ, रोड को फील कर रहा हूँ. नेचर. हाँ, नेचर को, रोड को. कहाँ पर भी एक बम्प भी नहीं है. butter smooth road and yeah, last 2 hours 150 kilometers. It was awesome. Very nice. सच में बता रहा हूँ ना, अगर आप सिर्फ नागपुर भी जाके सिर्फ रिटर्न आ जाओ ना, पैसा वसूल. So from 5 till 7:15, that was the best ride of this trip. I can say the best ride of my biking career till now. Seriously, the best. थोड़ा भी थकावट नहीं हो रहा है. And the road after entering the Telangana, as I said, the best. यहाँ से हैदराबाद है 200 किलोमीटर एग्जैक्ट, यानी मेरा घर एग्जैक्ट 200 किलोमीटर. So 2.5 hours if we won't take break, 3 hours if we take break. तो मेमोरी कार्ड वॉज डन और बैटरी भी ख़त्म हो गया था. आई थिंक आई हैव टू चेंज द बैटरी. आई हैव टोटल 4 बैटरीज इन विच 3 बैटरीज आर पफ्ड अप. लास्ट फ्यूल स्टॉप, it's 7:30. Now the estimated time of reaching is 11:35. Okay, we would be reaching at that time only. Almost आधा घंटे का ब्रेक यहाँ पे. भूख लग रहा था, don't know why. Finally, outer ring road is here. Time is exactly 11:07 and we have reached Hyderabad. Ready? 1000 exact for you. Now 11:32. Oh no, okay. Chalo, departing from here. This is Boinpalli. यहाँ से 5:30 बजे यहाँ से निकले. सैटरडे मॉर्निंग निकले थे और संडे नाइट वी आर बैक